So, hello student, welcome to the Malviya Academy, and in this period we are going to discuss the Caroline period. Basically, we have already discussed the Jacobean period in the previous session, and now we are going to discuss the Caroline period. Okay, and this period is all about the controversy. इस पीरियड ये पर्टिकुलर पीरियड क्या बताती है, पूरी इंग्लैंड की कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन को डिपिक्ट करती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, दैट इज द English Civil War happened in this particular age. Okay, after this particular age. So start करते हैं हमारा सेशन. So the two terms, the first one is Caroline and the second one is Commonwealth. And दोनों टाइम पीरियड को मिला के एक टर्म बनता है, that is the Puritans and the Puritan age. जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूरिटन एज क्या है और कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड क्या है. तो द पीरियड दैट कम्स आफ्टर द जैकोबियन एज 1625 to 1660 का जो टाइम पीरियड है, दैट पीरियड इज नोन एज द प्यूरिटन एज. एंड उसी प्यूरिटन एज को डिवाइड किया two parts में. The first one is Caroline age and the second one is the Commonwealth age or age of interregnum. And the Caroline age we will discuss, and the Caroline age included the time period of Charles I, and the interregnum period, the Commonwealth period जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, ओलिवर क्रोमवेल जो हमारे पावर में आते हैं, मिलिट्री पावर में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पावर में. द ओलिवर क्रोमवेल एंड रिपब्लिक, इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम रिपब्लिक आती है, एंड दैट पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ इंटररेग्नम एंड ऑल्सो कॉल्ड द कॉमनवेल्थ पीरियड. एंड कैरोलाइन पीरियड इज द टाइम पीरियड ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट इज बेसिकली अ सक्सेसर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट. Okay, so start करते हैं हमारा Caroline period, the first part of the Puritan age. The time period of the Caroline age is 1625 to 1649. And the most important thing about the Charles I, the first king of the history of England, जिसको beheaded किया गया, ऐसे first king थे Charles I. But क्यों behead किया गया? What is the reason behind this? Okay, इस particular period में हम इसी चीज को पढ़ेंगे about the, पहले हम historical background को देखेंगे, the famous event that is the English Civil War and the rise of Puritanism, and after that the society were divided into the two parts. The first one is royalist and the second one is parliamentarian. Those are supporter to the royalist. Those poets, those literary holders, cavaliers. Okay, and दूसरी साइड कौन है, पार्लियामेंट के सपोर्ट में एंड प्यूरिटन्स के सपोर्ट में, और जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है जॉन मिल्टन. कैरोलाइन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन. सो जो हमारे जॉन मिल्टन है वो कौन है, प्यूरिटन्स है, और रॉयलिस्ट कौन है, कैवेलियर पोइट्स. सो जस्ट लाइक द जैकोबियन पीरियड वी हैव डिस्कस्ड द नेम, दैट इज द किंग जेम्स का जो नाम था लैटिन में क्या बोला जाता है, जैकोब. उसी तरह जो चार्ल्स फर्स्ट का नाम लैटिन में कैरोलस बोला जाता है. That's why this period is known as the Caroline period. Okay. After the demise of James I, Charles I was appointed as a king in 1625 and in 1640. He was executed as the result of Puritan uprising under the leadership of the Oliver Cromwell. Who is the Oliver Cromwell? Oliver Cromwell is basically a powerful leader of the Puritans. Puritan का leader कौन था, Oliver Cromwell. And who were the Puritans? The most important thing, who were the Puritans? So Puritans is basically a Protestant.
प्यूरिटन है, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एंड द प्यूरिटन्स. पहले समझते हैं कि हु वर द प्यूरिटन्स. एक्चुअली प्यूरिटन्स जो है वो प्रोटेस्टेंट को ऐसा मानते हैं कि प्रोटेस्टेंट अभी भी कैथोलिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. प्यूरिटन्स रिलीजन पे ज्यादा बिलीव करते हैं. प्यूरिटन्स जो है वो जो बाइबल में जो ट्रेडिशन नहीं लिखे हैं उस ट्रेडिशन को जो मनाते जा रहे हैं उसको क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, उसके अगेंस्ट हैं. प्यूरिटन्स जो है वो रिलीजन के साइड हैं. प्यूरिटन्स इज द टाइप ऑफ ग्रुप ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, जॉय और एंजॉयमेंट के अगेंस्ट. ओलिवर क्रोमवेल के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो एंजॉय है, एंजॉयमेंट है, उसके अगेंस्ट है ओलिवर क्रोमवेल. ओके, सो प्यूरिटन्स आर बेसिकली अ प्रोटेस्टेंट, बट देयर इज सम डिलाइट डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एंड द प्यूरिटन्स. सो ये समझने की गलती नहीं होनी चाहिए कि प्यूरिटन्स और प्रोटेस्टेंट दोनों सेम हैं. ओके, it is the significant era both the politically and the historically, marked by the intense conflict between the monarch and the parliament. I have said now the conflict between the royalist and the parliamentarian. Who is the royalist? Royalist is basically a supporter of Charles I. And who is a parliamentarian? Actually जैसे हमारे इंडिया में अभी पार्लियामेंट है, ओके, लीडर्स हैं, उसी तरह इंग्लैंड में किंग के साथ साथ पार्लियामेंट भी चलता था. जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता था तो पार्लियामेंट का भी क्या उसमें पार्लियामेंट का डिसीजन, उस पर्टिकुलर डिसीजन में पार्लियामेंट का भी क्रेडिट होता था. पार्लियामेंट इंटरफेयर कर सकता था किंग के लिए गए डिसीजन में. बट यही चीज द डिवाइन राइट, बस यही एक चीज था जो किंग जेम्स को भी पसंद नहीं था और चार्ल्स फर्स्ट को भी पसंद नहीं था कि पार्लियामेंट क्या करे, इंटरफेयर करे उनके लिए के डिसीजन में. दैट्स व्हाई चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में हम 11 ईयर टायरनी की बात करते हैं. गाइस, 11 ईयर टायरनी, दैट मीन्स 11 साल तक चार्ल्स फर्स्ट ने रूल किया विदाउट द पार्लियामेंट. और दैट 11 ईयर टैक्स इंक्रीज कर दिए, सिचुएशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो गई, एंड दिस इज द बिग रीजन बिहाइंड द इंग्लिश सिविल वॉर. ओके, कम टू द टॉपिक. ये मैंने एक ओवरऑल नॉलेज दी आपको. ओके, टॉपिक पे आते हैं. कैरोलाइन पीरियड स्टार्ट हुआ है, किंग चार्ल्स फर्स्ट को थ्रोन मिला. व्हाई दिस नोन इज द कैरोलाइन पीरियड? क्योंकि लैटिन में चार्ल्स फर्स्ट को, चार्ल्स के नाम को कैरोलस बोला जाता है. दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज द कैरोलाइन. दिस significant era, this era include the English Civil War and the temporary abolition of the monarchy. This period fall within the broader context of the early 17th century following the Jacobean era and predicting the Commonwealth period under the Oliver Cromwell. Then some political background. पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा था. इस पर्टिकुलर पीरियड में हम बस कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे. सोशल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में हम देखेंगे कि किंग, पार्लियामेंट्री. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन्स. सोशल कॉन्फ्लिक्ट में टैक्स इंक्रीज करेंगे चार्ल्स फर्स्ट. So political conflict, the first point is divine right of king. King James first and Charles first का कहना था कि king is just like the god. राजा है वो भगवान है. king जो भी डिसीजन लेगा
पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए, या पार्लियामेंट हमारे इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए पार्लियामेंट का। चार्ल्स फर्स्ट strongly believed in the divine right of king, meaning he thought his authority to rule come directly from the God, making him accountable only to God, not the parliament or the people. This belief set the stage for the conflict with the parliament. ये एक रीजन था कॉन्फ्लिक्ट का पार्लियामेंट के साथ, which was increasingly asserting with own authority, particular over the taxation and the governance. Then conflict with the parliament. One of the defining feature of the Caroline period was the Charles' constant struggle with the parliament. He dissolved parliament multiple times. He dissolved the parliament multiple times and ruled without it 11 years, 1629 to 1640. That is the 11-year tyranny, tyrant ruler. Okay? A period known as the personal rule. ये 11th year में उसने अपना पर्सनल रूल किया. During this time, Charles raised money through the controversial means such as the imposing tax without the parliament consent. Example, SIP money. इस पीरियड में 11-year tyranny, जो 11 year के पीरियड में चार्ल्स फर्स्ट ने टैक्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया, मनमानी करना शुरू कर दिया. ओके, द वन एग्जांपल व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज द सिप टैक्स. सिप टैक्स के बारे में ये कहा जाता है कि चार्ल्स फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स फर्स्ट डिसाइड टू टेक द सिप टैक्स टू द एवरीवन, कि सारे लोग सिप टैक्स देंगे, इधर आप सिप का यूज करो या मत करो. इवन द वर्किंग क्लास पीपल should also give the sip tax according to the Charles first. So ये क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट में लोग आए एंड यही सारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो रीजन बना किसका? इंग्लिश सिविल वॉर, एंड हमारे किंग को बीहेड किया गया. Then religious tension. Religious conflict was also central to the period. One most important thing about the religious conflict or the religious tension, the Charles first want to marry with the another Catholic princess. जो हमारे चार्ल्स फर्स्ट जो थे want to marry with another Catholic princess. So the parliament or the England people think that if the Charles first married with the Catholic princess, the next successor will definitely be the Catholic. Okay? जो हमारा नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो क्या होगा? कैथोलिक होगा. ओके, और ये चीज पार्लियामेंट को और इंग्लैंड के लोगों को क्या था? एक्सेप्टेबल नहीं था. दिस इज द बिग रीजन बिहाइंड द इंग्लिश सिविल वॉर. Charles married the Catholic Henrietta Maria of France, which causes the suspension among the Protestant subject. His support for the Archbishop Laud reform. Archbishop Laud reform is basically a Laud reform about the Catholicism, which aim to bring the greater uniformity and formality to the Church of England, was seen by many as move toward the Catholicism. Further alienating the Puritans and the other Protestant group. So, political conflict and religious conflict. Then, one another events that happened in the Caroline period is the Bishop War. Bishop War is basically a Archbishop Laud reform, is basically type of the war. This conflict were between England and the Scotland, sparked by the
Charles' attempt to the imposed Anglican practices. Who is the Anglican? कैथोलिक्स की ब्रांच, कैथोलिक या कैथोलिज्म में ब्रांच डिवाइड हुए. ओके, तो एंग्लिकन इज द ब्रांच ऑफ द कैथोलिज्म. And the Scottish King George, the war weakened Charles and forced him to recall the Parliament, leading the series to crisis that culminated in the Civil War. Then historical background. The result of all this conflict is will be the English Civil War. ये सारे कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या हुआ? इंग्लिश सिविल वॉर. व्हाट इज द सिविल वॉर? इंग्लिश सिविल वॉर में क्या हुआ? एक टाइप ऑफ बैटल क्रिएट हुआ कि चार्ल्स फर्स्ट को अब हमारे किंग से हटा देना चाहिए. इंग्लैंड में रिपब्लिक आया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड द डेमोक्रेसी? इंग्लैंड में डेमोक्रेसी कब आया? व्हेन द मैरी सेकंड एंड विलियम द ऑरेंज कुड गेट द थ्रोन. दैट टाइम क्या डिसीजन लिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कि अब जो भी रूल होगा वो, जब भी कोई रूलर होगा वो क्या होगा? प्रोटेस्टेंट होगा. एंड पार्लियामेंट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं रहेगा. सो दैट टाइम इंग्लैंड में रिपब्लिक आया. और अभी के टाइम दैट टाइम इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आया. और अभी के टाइम इंग्लैंड में रिपब्लिक आया. देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक एंड द डेमोक्रेसी. आई होप आप समझ रहे होंगे. द टेंशन बिटवीन द Charles and the Parliament, as well as the religious and the economic factor, eventually erupted into the Civil War. The entire period was marked by the Civil War, which divided the people into the two factions, one loyal to the king and other opposed to him. दो पार्ट में लोग डिवाइड हो गए. The first part, support to the king, royalist, opposed to the king, parliamentarian. Okay. The crisis began when James First, and जब मैं जैकोबियन पीरियड आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया कि जैकोबियन पीरियड वाज द बेस. जैकोबियन पीरियड एक बेस क्रिएट किया इंग्लिश सिविल वॉर का, बिकॉज डिवाइन राइट पे बिलीव करते थे हमारे किंग जेम्स फर्स्ट भी. That's why that period, the Jacobean period, was the base behind the English Civil War. The crisis began when the James I, who had reclaimed the right of royalty and Act of Parliament, he gave too much importance to the divine right and began to ignore the Parliament. Parliament को ignore करना जेम्स फर्स्ट ने स्टार्ट कर दिया था. डिवाइन राइट पे बिलीव किया था. The Puritans, who had become a powerful force in the social life of the age, began the movement of the social and the constitutional reforms. I have told who were the Puritans. The Puritans influenced the English middle class during the reign of the James I. Puritans are the supporter of the middle class. That's why मिडिल क्लास का सपोर्ट मिला ऑलिवर क्रोमवेल पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट को. बट धीरे धीरे ये डोमिनेंस में क्रिएट होने लगा, चेंज होने लगा. ऑलिवर क्रोमवेल के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि कैथोलिक पीपल्स के साथ डोमिनेंस क्रिएट होने लगा. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऑलिवर क्रोमवेल ने संडे की छुट्टी, द हॉलीडे, संडे हॉलीडे को क्या किया? चेंज कर दिया कि संडे जाए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, संडे का चर्च जाने के लिए. बेसिकली प्यूरिटन्स आर द रिलीजियस. सो उन्होंने, उनका लाइफ का मोटिव ही था रिलीजन. It was not the till of time his successor that the Puritanism emerged as a great national power. और इसके बाद जो एज ऑफ इंटररेगनम के टाइम देखते हैं, when the Oliver Cromwell जब came the power,
दैट टाइम जो प्यूरिटन थे वो एक नेशनल पावर बन गया. The hostility was began in 1642, lasted till the banishment of the Charles I in 1649. 1649 में बैनिश कर दिया गया चार्ल्स फर्स्ट को. There was the little political stability from 1649 to 1660. कुछ political stability देखने को मिला 1649 to 1660 time period of the Oliver Cromwell. क्योंकि इंग्लैंड में क्या हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. अब क्या हुआ, ओलिवर क्रॉमवेल, when the Oliver Cromwell जब came in the power, so 1658 when the Oliver Cromwell died and Richard Cromwell came in power, that time Richard Cromwell was unable to manage this power and unable to manage the military power, unable to manage the whole England. अब एक नया क्वेश्चन था कि मोनार्की को फिर से रिस्टोर होना चाहिए एंड चार्ल्स फर्स्ट के ही बेटे चार्ल्स सेकंड को बुलाया गया एंड जेम्स सेकंड को, एंड दैट पीरियड वाज नोन एज द रेस्टोरेशन. आई सेड अर्लियर दिस turbulent year saw the establishment of the Commonwealth under the leadership of the Oliver Cromwell. Okay. Then the rise of the Puritanism. The rise of the Puritans. The Puritan movement may be regarded as the second and the Renaissance. The rebirth of the moral nature of man following the first Renaissance. Intellectual awakening of the Europe in the 15th and the 16th century. Puritanism became the political as a moral and the religious force of that era. Puritanism had the two chief objects. The first was the personal righteousness and the second was the civil liberty. That the two chief objects of the Puritans. It aimed to make the men honest and make them free. And Puritan became the great national movement. It included the English churchman, separatist, Calvinist. Who is the Calvinist? John Calvin. John Calvin is the leader of the Puritan. ओके, जॉन कैल्विन का नाम आता है, वो पूरे प्यूरिटन्स की कौन है, लीडर हैं. और जो जॉन कैल्विन को फॉलो करते हैं उनको क्या बोला गया, कैल्विनिस्ट. कॉन्वेंटर्स एंड द कैथोलिक नोबलमैन. Puritanism exercised the great influence upon the tone, temper of English life and thought. The spirit which is introduced was the fine and noble. During the Puritan rule of the Cromwell, some of the law were passed. Simple pleasure were forbidden. Theatre were banned. In the age of interregnum, because Puritan किसके अगेंस्ट थे, जॉय के अगेंस्ट थे. ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए बैन कर दिया, थिएटर बैन कर दिया गया. And that time, the one work that I have said earlier, the John Bunyan, Pilgrim Progress, the religious theme, the religious work based on the theme of religion. Okay, आया. Theatre were closed. Puritanism destroyed the human culture and sought to confine it within the circumstances field of own particular interest. It was fatal both art and literature. Great literature could not be produced during this period. Age of interregnum के time, Puritan age के time, great literature produced नहीं हुआ. But John Milton was an exception. Paradise Lost was then, and क्या है, Paradise Lost एक exception है.
and social and economic strain. This period was also categorized by the economic challenge. England was increasingly involved in the colonial expansion. जैकोबिन टाइम पीरियड के टाइम हमने देखा था कि अमेरिका का क्या हो रहा था, एक्सपेंशन. But internally, the cost of war, religious division, and the oppressive tax strained the economy and the society. इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि कोई भी उतना कॉलोनियल एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला. कल्चरल एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट. अब देखते हैं लिटरेचर में क्या चेंज हुए इस पर्टिकुलर पीरियड में एंड व्हाट इज द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक. Metaphysical poet. Metaphysical poet, we have discussed earlier B.Ed. जो earlier session में हमने discuss किया था metaphysics को, वही metaphysics का continuation चल रहा है. जब भी कोई एक time period change होता है तो poet थोड़ी change हो जाते हैं. Poet continue रहते हैं. इवन मिल्टन, जॉन मिल्टन का टाइम पीरियड हमें रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के टाइम भी देखने को मिलता है. मिल्टन वाज द प्यूरिटन. सो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड व्हेन द मोनार्की वर रेस्टोर्ड, तो मिल्टन को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है. मिल्टन को जेल जाने की नौबत आ जाती है. मिल्टन के वर्क जो उनके लास्ट वर्क हैं उनको पब्लिश कराने में प्रॉब्लम आती है. ओके, सो राइटर कंटिन्यू है. यहाँ पे भी हम देखते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री का कंटिन्यूएशन चलता है. इवन सम मेटाफिजिकल कंसिडर्ड एज द कैवेलियर. So the Caroline period saw the significant contribution of literature, particular with the metaphysical poets like John Donne, George Herbert, and Andrew Marvell, flourishing during this time. And the Cavalier poets Robert Herrick, Richard Lovelace, Sir John Suckling, who were the loyal to the king, wrote poetry that reflect the value of country life, honor, and the royalty. Okay, the one more important thing about the Cavaliers. Cavaliers are also called the son of Banes. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. की इवेंट्स याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पर्टिकुलर पीरियड्स आता है. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि ड्रामा कब बैन हुआ था, थिएटर कब बैन किए गए. सो की इवेंट्स. 1625 चार्ल्स फर्स्ट ascended the throne. 1628 Parliament present the Petition of Right, which sought to limit the king's power, especially regarding the arbitrary taxation and imprisonment. 1629 to 1640 the personal rule or the 11-year tyranny, when the Charles ruled without Parliament. 1639 to 1640 is Bishop War with Scotland. 1640 to 1651 English Civil War. 1643 Licensing Act and the Milton most famous work Areopagitica. What is Areopagitica? Areopagitica is basically the work against the Licensing Act. Areopagitica based on the free will, free man concept. 1649 the Charles I beheaded by the Richard Braddon. Execution of Charles I and establishment of the Commonwealth. Oliver Cromwell emerged as the Puritan leader. So these are the key events. Then why Charles I was beheaded? The first reason is political tyranny. The second one is religious politics. And third one is civil war and breach of trust. Lack of trust. Okay. Then feature of Caroline literary period. Literary characteristic of the Caroline period. Political and religious turmoil. We have already discussed about the English Civil War. Then Cavalier poets. Who are the Cavaliers? Cavaliers are the supporter to the king.
Cavalier basically royalist. The court poet, known as the Cavalier poet, were the loyal to the Charles I. They celebrate the ideas of chivalry, loyalty, and the aristocratic way of life. Their poetry often focus on the theme of love, honor, pleasure, using elegant controversy, also called the son of Ben and the tribes of Ben, because their writing is just similar to the Ben Jonson writing. ऐसा लगता था कि बेन जॉनसन के बेटे ने ही लिखा है, इतना सिमिलर था बेन जॉनसन की राइटिंग से इनकी राइटिंग. That's why they are known as the son of Ben or the tribes of Ben. Okay. Metaphysical poetry continuation. Then drama. The Caroline period also saw the continuation of Jacobean drama. The outbreak of the Civil War 1642. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बार बार मल्टीपल टाइम आते हैं. थिएटर कब बैन किया था? टाइम पीरियड 1642, which marked the decline of the dramatic work. Then two dramatists, John Ford, James Shirley, का नाम आता है इस पर्टिकुलर पीरियड में. Then religious and political writing. Religious writing भी लिखा गया and political writing में जॉन मिल्टन का नाम आता है. Religious writing में जॉन मिल्टन का नाम आता है. John Milton is famous for the religious and political writing. Paradise Lost is based on religion, but Areopagitica based on the politics. Okay. But what about the Lycidius? Lycidius क्या है? Elysee, based on the death of his friend, the Edward King. It is not the religious or the political work. That's why I have mentioned. Then prose work. The most famous prose work, Leviathan. Leviathan by the Thomas Hobbes is very important. ये आपके एग्जाम में आता है that time. And Leviathan is basically a political offense. Other playwrights: Robert Burton, Thomas Fuller, Isaac Walton, Jeremy Taylor. Jeremy Taylor is important. Jeremy Taylor is known as Shakespeare Divine. And the Spencer of pulpit. Then Cavalier. These are the Cavalier poet. These are the supporter of the royalists, supporter of the Charles I. Okay, against the parliament rule. The theme, main theme are love, beauty, and the most important, carpe diem. What is the carpe diem? Carpe diem is all about the seize the day or enjoy the day. Present में जियो, कल की चिंता मत करो. That is the main theme of the Cavalier poets. So, हो गया.